So the greenhouse technology, what is the meaning of greenhouse technology? Is a house in which plants are kept to grow. ऐसा मीन्स जो पूरी तरह से किसमें होता है ग्लासेस में कवर्ड होता है मीन्स etymologically greenhouse means a house in which a plant are kept to grow. So a greenhouse is a structure covered with a transparent material in which various crops are grown under a system of farming known as protected cultivation. और कल्टीवेशन किस में किया जाता है under a shades means it's the most greenhouse is meant for producing a shades and a cool temperature for the plant growing within it. Next is the advantage. एडवांटेजेस क्या देखे थे हमने ग्रीन हाउस के ग्रीन हाउस यूज टू ग्रो exotic tropical plant to protections or a seed perennial annual vegetables can be raised much more successfully. Next is a greenhouse are more popular in cooler place like hill stations. Okay, so these are the advantages of greenhouse. Then what is the disadvantage of greenhouse? Disadvantage क्या हो सकता है उसका एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं like it's in nursery propagation hardening of plants. Then what is the disadvantage of greenhouse? Yes, इतने सारे एडवांटेजेस देखे then डिसएडवांटेज क्या है बोलो किसी को भी नहीं पता है डिसएडवांटेज इट इज एक्सपेंसिव टू बिल्ड राइट वहाँ पे हम लोग जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं या फिर कोई मशीन यूज कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव यूज होती है ना नेक्स्ट इज इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एंड वाटर बिल्स देन टेम्परेचर हमको वहाँ पे कंट्रोल करना पड़ता है ग्रीन हाउस में देन उसकी मेंटेनेंस है केयर है लाइक रिक्वायर कांस्टेंट maintenance and care. So these are the disadvantage of the greenhouse. Okay. Next is the greenhouse types and based on shapes. So there are different types based on the shape. कौन कौन से shapes देखे थे हमने span roofed house with a side staging. Next is the span roof house with a central staging and span roof detached house. And next is the span roof breach and furrow. तो सारे diagrams जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. Okay, like a lean type of greenhouse, even span type greenhouse, uneven span type of greenhouse. Okay, next is a type of greenhouse based on a purpose. So first is a based on material green type of greenhouse based on material पे based होता है means greenhouse for the like a built in glass plastic wooden frames clothes covers so यहाँ पे ये material used होगा next is a layout and constructions means wooden frame structure construction कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है लाइक wooden frame structure pipe frame structure और a truss frame structure
नेक्स्ट थर्ड टाइप इज अ ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन द कवरिंग मटेरियल. कवरिंग मीन्स वहाँ पे ग्रीन हाउस को जो कवर करने के लिए मटेरियल यूज हो रहा है, लाइक अ ग्लास ग्लाजिंग, देन प्लेन शीट, प्लास्टिक फिल्म्स, यूवी स्टेबलाइज्ड, देन ये सारी जो चीजें वो कवर करने के लिए यूज होते हैं. तो थर्ड टाइप जो है बेस्ड किस पर रहेंगी, कवरिंग मटेरियल पे. नेक्स्ट इज अ irrigation system in greenhouse. ओके, मैं डायरेक्टली अभी एक्सप्लेन करती हूँ. आप लोग ने नोट्स लिखे हैं ना? नोट्स कंप्लीट किए इसके? इरिगेशन सिस्टम इन ग्रीन हाउस, सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, जिसमें हमने दो टाइप्स देखे थे, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर. एंड टाइम ऑफ इरिगेशन, टाइम क्या होता है? सो लाइट as well as too heavy watering is bad. Then potted plants need more frequent water than plant grown in the ground, and different type of plant have a different water requirements. So this is the time of irrigation, and based on the two methods, surface water or a groundwater. So method of irrigation, there are four main method of irrigation. Four methods देखे थे हमने irrigation के, like a surface irrigation, subsurface irrigation. Subsurface irrigation means underground irrigation. Okay, जो अंडरग्राउंड इरिगेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज सबसरफेस इरिगेशन, जिसमें परफोरेटेड पाइप्स यूज होते हैं, राइट, and laid underground below the root zone, and water is let into a pipes. मीन्स वहाँ पे जो प्लांट को वाटरिंग की जाती है वो वहाँ पे पाइप का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज अ एरियल ओवरहेड स्प्रिंकलर इरिगेशन. एरियल इरिगेशन मीन्स स्प्रिंकलर इरिगेशन, मीन्स वहाँ पे स्प्रिंकलर का यूज होता है. इन दिस मेथड द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर अ प्रेशर थ्रू अ pipes to the area to be irrigated, where it is passed out through a nozzle or a sprinkler system. Sprinkler system से वहाँ पे watering की जाती है. Next is the water can irrigation. It is a mechanical irrigation when spotted plants in greenhouse are irrigated individually by a water can at a interval. मीन्स वहाँ पे जो watering करते हैं वो interval time पे करेंगे, मीन्स 2 to 3 days as per the requirement of the plants. Okay, then merits and demerits. तो merits and demerits क्या होंगे उसके? इरिगेशन के मेरिट्स क्या होते हैं? इट मीन्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. एडवांटेज क्या है इरिगेशन का? तो इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, वहाँ पे इफिशिएंट अमाउंट में वाटर का यूज हो रहा है, एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा. जो भी हम वाटर यूज करें, प्लांट को वाटरिंग करें, वो यूनिफॉर्म वे में होगा, मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. सो दीज आर द मेरिट्स, वी कैन से द एडवांटेज ऑफ इरिगेशन. एंड व्हाट इज डीमेरिट्स? इट इज हाई कॉस्ट, मीन्स अगर हम वहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन कर रहे हैं तो स्प्रिंकलर का यूज हो रहा है ना? देन सो इट इज हाई कॉस्ट है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूम होता है. ओके, नेक्स्ट इज अ मॉइस्चर सप्लाई. द ग्रीन हाउस foliage plant need a lot of moisture for their growth. To provide adequate supply of moisture, small pools fitted with a fountain in the center of greenhouse. Next is a care and attention. यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ इरिगेशन देखे है ना, मेथड्स ऑफ इरिगेशन. And next is the care and attention. So pot rotation in greenhouse. First point is a pot rotation. So greenhouse, the plant tend to grow towards the direction of lights, right? Plant जो है वो grow कहाँ होता है? Towards the direction of light and bend in that direction. जहाँ पे उसको light मिलती है वहीं पे वो bend हो जाता है.
right? So the bend in the direction, in that direction to keep them straight, the pot should be rotated regularly. मीन्स अगर सनलाइट उसको जहाँ से भी मिलती है, प्लांट क्या होने लगता है वहां पे, उस साइड पे वो बेंड होने लगता है, तो हमको रेगुलर उसको रोटेट करते रहना पड़ेगा पॉट को। आया समझ में? सो दिस इज द केयर एंड अटेंशन, अटेंशन देनी पड़ेगी वहां पे। नेक्स्ट इज द washing. So foliage should be sprayed once in a while to wash dust that accumulates. Means foliage किसको बोलते हैं? हेलो, व्हाट इज foliage? रिप्लाई नहीं करते हैं तुम लोग। ईफा, व्हाट इज foliage? Yes, हाँ ma'am. मुस्कान, हाँ बोलो। जो लीव्स होते हैं, प्लांट के लीव्स को क्या बोलते हैं? हाँ, द foliage should be sprayed once in a while टू वॉश डस्ट। जो भी उस पे डस्ट होंगी, लीव्स पे डस्ट होती है ना, उसको वॉश किया जाता है बाय वाटर। सो वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट in care and attention. Then manuring. So well-rotten cattle dungs or a horse manure to be added in every month. मीन्स वहाँ पे मैनुअर है, उसको ऐड करना रहता है, या फिर फर्टिलाइजर है वो ऐड करेंगे। मीन्स well rooted cattle dungs or horse manure to be added in every month. Then next is the fertilizer. So fertilizer भी उसी तरह ऐड करना है। मीन्स ग्रीन हाउस प्लांट शुड foliar spread with liquid manure and inorganic fertilizers such as ammonium sulfate or a urea. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दी हुई है फर्टिलाइजर की, लाइक अमोनियम सल्फेट और यूरिया इन अ वाटर वंस एवरी फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स, फोर्टनाइट किसको बोलते हैं? इट मीन्स 15 days. Okay, the proportion is 30 grams in 5 liter water. इतना proportion लेना है fertilizer का। Next is a drainage. So proper drainage is maintained to avoid a waterlogging and spread of disease. यानी अगर हम वाटर वहाँ पे इरिगेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे वाटर लॉग नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज का प्रोसेस भी वहाँ पे होना चाहिए। मीन्स प्रॉपर ड्रेनेज इज मेंटेन टू अवॉइड द वाटर लॉगिंग एंड स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। नेक्स्ट इज एस्थेटिक वैल्यू. So aesthetic value means it good looking hanging basket containing the orchids, asparagus, etc. should be fixed on a pole or suspended from the roof at a prominent place to beautify the greenhouse. मीन्स अगर हम वहाँ पे गार्डन बना रहे तो वो कैसा लगना चाहिए? एस्थेटिकली व्यू होना चाहिए। मीन्स इट लुक लाइक अ ब्यूटीफुल। ओके, कैसे भी प्लांट ग्रो करेंगे तो वो अच्छे नहीं दिखेंगे, वहाँ पे क्या करना है, उसको ब्यूटीफुल लगना चाहिए वो। तो एस्थेटिकल व्यू भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज अ हीटिंग. इन विंटर ऑन अ हिल, ग्रीन हाउसेज आर हीटेड बाय हॉट वाटर और बाय स्टीम्स। तो इसकी भी केयर एंड अटेंशन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज अ प्रॉनिंग. प्रॉनिंग मीन्स, व्हाट इज मीन बाय प्रॉनिंग? कब हुआ है तुम्हारा? प्रॉनिंग क्या होता है? जो ओवर ग्रोथ होती है प्लांट की उसको कट करते ना, व्हाट इज मीन बाय प्रॉनिंग? कटिंग ऑफ प्लांट in appropriate manner means overgrowth and disease part of plant in greenhouse are prone to
और डिसाइड शेप, साइज, हेल्दी ग्रोथ्स। तो वहाँ पे क्या करना है, जो भी प्लांट पार्ट है, जो डिसीज वाला प्लांट पार्ट होगा या फिर कोई ओवर ग्रोथ हुई है प्लांट की, तो वहाँ पे उसको कट किया जाता है फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. Okay, it means pruning. Next is a pest control. By using a mechanical, cultural, or a biological and chemical method, the pest is a greenhouse is control. Pest control का भी यूज करेंगे वहाँ पे by using mechanical, cultural और a biological and chemical methods. तो वहाँ पे different methods यूज करके क्या करते हैं, pest control यूज करते हैं और प्लांट को की ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग मैकेनिकल कल्चर, biological culture or chemical method. Last is a shade plant. Shade loving climbers may be allowed to grow in a greenhouse. Next topic is a hardening of plants. यहाँ पे हमने क्या देखे, इरिगेशन सिस्टम इन ग्रीन हाउस में उसके दो टाइप्स थे, सोर्स ऑफ वाटर फॉर irrigation, surface water and green water, groundwater, sorry. And next is the method of irrigation. Methods में four methods थे. Then care and attention. Now I start hardening of plants. Hardening means, hardening क्या होता है, plant grow in a greenhouse are usually delicate due to a control condition. जो plants ग्रीन हाउस में ग्रो किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, कंट्रोल कंडीशन में होते हैं. कंट्रोल कंडीशन मीन्स वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लांट ग्रीन हाउस में टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है. कूल टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर, प्लांट के नेचर के अकॉर्डिंग हम उसको वहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड करते, राइट. सो द प्लांट ग्रोन इन ग्रीन हाउस आर यूजुअली delicate due to a control condition. These plants cannot withstand natural odds of wilt immediately. To adopt greenhouse plant to withstand field condition is called as a hardening. Okay, so next is a technique of hardening. Technique क्या होती है, so greenhouse plant are provided higher light and high temperature at a daytime. वहाँ पे ग्रीन हाउस जो है वो प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाई लाइट एंड हाई टेम्परेचर at a daytime. Simultaneously, same plant at night are provided with a very low temperature. Okay, डे के टाइम में क्या हो रहा है, वहाँ पे लाइट और जो टेम्परेचर है वो हाई रहेगा, बट साइमल्टेनियसली एट द सेम प्लांट फॉर द नाइट प्रोवाइड विथ अ वेरी लो टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है फॉर द नाइट. सच ए कंडीशन आर प्रोवाइड फॉर अ 6 to 8 days. कितने डेज के लिए होगा वो, for a provided for a 6 to 8 days. These are called as the hardening condition. So this is the hardening condition. Hardening is stated 6 to 8 days before the greenhouse plant are to introduce field condition. Same hardening technique is applicable for a tropical temperature or a hill plants. सेम मीन्स ये जो टेक्निक है, कौन सी टेक्निक हार्डनिंग की, कि डे के टाइम में वहाँ पे टेम्परेचर और जो लाइट है वो हाई हो रही है ना, हाई प्रोवाइड अ हाई लाइट एंड हाई टेम्परेचर एट डे टाइम एंड साइमल्टेनियसली सेम प्लांट at a night are provided with a very low temperature. So same hardening technique is applicable for the tropical temperature and hills plants. Okay, next is a principle of hardening. So high light and high temperature during a daytime, simultaneously high rate of photosynthesis means अगर हम उसको वहाँ पे लाइट प्रोवाइड कर रहे, प्लांट को डे टाइम में लाइट ज़्यादा होगी, हाई टेम्परेचर होगा, तो मीन्स स्टिमुलेट हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब वहाँ पे प्लांट का फोटोसिंथेसिस रेट भी कैसे हो रहा है, हाई हो रहा है. Okay, so high rate of photosynthesis result in the accumulation of carbohydrate in the tissues. Means rate of photosynthesis अगर high है means accumulation of carbohydrate in the tissue, and low night temperature maintain low rate of respiration. एंड डे टाइम में रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है, हाई रेट में हो रहा है, बट नाइट में क्या हो रहा है, टेम्परेचर मेंटेन, लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड लो रेट ऑफ सेल डिवीजन. मीन्स अगर फोटोसिंथेसिस हाई होंगी
तो रेस्पिरेशन भी क्या होगा, हाई होगा, मीन्स रेट ऑफ सेल डिविजन इज ऑल्सो हाई। इन सेम प्रोसेस कैसा है नाइट के लिए, तो नाइट में क्या हो रहा है, लो हो रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट। फोटोसिंथेसिस भी लो है, मीन्स रेस्पिरेशन लो है, तो क्या होगा वहां पे, सेल डिवीजन भी कैसे होगा, लो रेट में। ओके, means the high light and high temperature during the daytime stimulates high rate of photosynthesis, and high rate of photosynthesis result in a high accumulation of carbohydrate in the tissues, and low night temperature maintain low rate of respiration and low rate of cell division। इतना समझ में आया? हेलो? Okay, next point is accumulation of carbohydrate within the tissue are used the development of new root systems. Thus, the rate of new root formation is dependent on supply of reserve carbohydrate. Means अगर कार्बोहाइड्रेट का accumulation हो रहा है within the tissue are used, इसलिए यूज हो रहे हैं वो for the development of new root system। ओके, न्यू रूट्स के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे यूज होता है। द रेट ऑफ न्यू रूट फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट अपॉन, किस पे डिपेंड है वो, रूट फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू रूट फॉर्मेशन इज dependent on supply of reserve carbohydrate within the tissue. So hardening help to accumulate more carbohydrate in tissues। ओके, हार्डनिंग यहाँ पे हेल्पफुल होता है, हेल्प किसके लिए कर रहा है वो, accumulate more carbohydrate in tissue, it helps the plant to form a new roots। मीन्स वहाँ पे वो अगर हम हार्डनिंग करें तो वहाँ पे न्यू फॉर्मेशन ऑफ रूट होगा, मीन्स हेल्प द प्लांट टू फॉर्म अ न्यू रूट्स इन फिल्ड कंडीशन फॉर अ एस्टैब्लिशमेंट। so this is the principle of hardening। okay, next is the greenhouse technology। so what is the meaning of greenhouse technology? Greenhouse means a house in which plants are kept to grow under the Indian climate condition। The term greenhouse includes a glass house for a plant and any other structure for growing a shade-loving plants। greenhouse में कौन से plants grow होते हैं? shade-loving plants जो रहेंगे वो वहाँ पे grow होंगे, मैंगो ट्री grow नहीं करते। ओके, so meaning क्या है उसकी, which plants are kept to grow under an Indian climatic condition or glass house of plants and any other structure for growing the shade-loving plants। And advantages क्या देखे हमने, plant can be protected from a adverse environmental condition। मीन्स हम वहाँ पे उसको टेम्परेचर, जो भी प्लांट है उसको प्लांट के नेचर के अकॉर्डिंग प्लांट को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन उसको प्रोवाइड होती है जिसका उसका नेचर होगा। So the plant produce products can be grown and marketed either or later than those produced outdoors। ओके, नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ ग्रीन हाउस। तो आप लोग ने वो जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे एज इट इज यहाँ पे भी रेफर करना है इस टॉपिक के लिए। देन लेआउट एंड कंस्ट्रक्शंस में भी सेम रहेगा, मीन्स लोकेशन कहाँ पे होती है उसकी, तो ग्रीन हाउस शुड बी लोकेटेड ऑन अ स्लाइटली रेस्ड ग्राउंड, इट शुड नॉट बी सिचुएटेड बिलो द लार्ज ट्रीज, है ना, लार्ज ट्रीज के नीचे उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है। and direction is a cool temperature condition and tropical conditions होती है, these are the direction। next is the size कितनी होनी चाहिए, size should be 2.4 meter width and 3.0 meter long। तो सेम सेम यहाँ पे है पूरा जो ये टॉपिक है, मीन्स शेप है, हाइट है, कंस्ट्रक्शंस कैसा होना चाहिए, देन टाइम ऑफ इरिगेशन,
मेथड ऑफ इरिगेशन है. ओके. Next is the economic importance of greenhouse. What is the economical importance of greenhouse? Yes. Economically important क्या है उसका? Means need of greenhouse in India. So conservation means protection. Okay, we can say the protection. India is rich in its plant resources or a ornamental plant, right? India जो है rich in plant resources and ornamental plant. To conserve such resources, greenhouse is important. कुछ ऐसे plants है जो कैसे है, अम, जिनको कंजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उनको कंजर्व करने के लिए. मीन्स प्लांट रिसोर्सेज और जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है उनको कंजर्व किस में किया जाता है? ग्रीन हाउस में. सो दिस इज द नीड ऑफ ग्रीन हाउस इन इंडिया. देन domestication of wild plant with ornamental value can be carried out in greenhouse. Greenhouse में यहाँ पे ornamental value can be carried out in greenhouse. Okay. लास्ट पॉइंट ही बचा है सिर्फ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट का. आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके.